Welcome to the Tech Coaching channel. In this lecture, you are going to learn theoretically concept of CSS that is called Cascading Style Sheet. Now let's start the first lecture of this topic, Introduction to CSS. The content of this lecture: what is CSS, CSS Syntax, CSS Selector, types of CSS, CSS Comments, CSS Box Model. What is CSS? CSS स्टैंड फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट. CSS की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है कास्केडिंग स्टाइल शीट. CSS इट्स अ स्टाइल शीट लैंग्वेज होती है दैट इज नॉट कॉल्ड अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. CSS रिस्पॉन्सिबल होती है फॉन्ट के, कलर के, टेक्स्ट साइज के एंड मच मोर. जो CSS का यूज होता है वो HTML टैग्स को डिजाइन करना होता है और जो CSS हमारे पास वाइडली यूज हो रही होती है ऑन द वेब पेजेस. CSS के सिंटैक्स को हम किस तरह से राइट कर रहे होते हैं? H1 is a selector and under the brackets is a declaration block. HTML tag H1 is a property of HTML and under the bracket of color is a property and assign the value of the color. It's yellow, it's the value of color. Selector. There are several different types of selectors in CSS. Number 1, CSS element selector, CSS ID selector, CSS class selector. Number 4, CSS universal selector. Number 5, CSS group selector. These 5 selectors are defined in the next lecture. Types of CSS. There are 3 types of CSS. Number 1, inline CSS. Number 2, internal CSS. And number 3, external CSS. CSS. Inline CSS. Inline CSS होती कैसे है, हम कैसे यूज़ कर रहे होते हैं? जो हमारे पास HTML टैग्स होते हैं हम विद इन द HTML टैग्स CSS यूज़ कर रहे होते हैं. Inline CSS is used to apply CSS on a single line or element. Internal CSS. Internal CSS होती है हमारे पास जो विद इन द हेड टैग हम यूज़ कर रहे होते हैं. स्टाइल टैग के अंदर जो स्टाइलिंग हो रही होती है वो होती है हमारे पास internal CSS. Internal CSS is used to apply CSS on a single document or page and it is written inside the style tag within head section of HTML. External CSS जो होती है वो हम उसके लिए एक अलग से फाइल बना रहे होते हैं और हम href के थ्रू हम उसको लिंक कर रहे होते हैं पेज को अपने इंडेक्स पेज HTML पेज के साथ. External CSS is used to apply CSS on multiple pages or all pages. Its extension must be .css. For example, style.css. जो हमारा extension होता है फाइल को सेव करने का वो होता है .css. CSS Comments. Comments are ignored by browser. Browser ignore कर रहे होते हैं comments को. It is very helpful for the user who writes your code so that they can easily understand the code. जब हम कोड कर रहे होते हैं HTML का तो हम वहाँ पे कमेंट्स के थ्रू मेंशन कर देते हैं कि इस पार्ट पे ये वाला हमारा काम हुआ होता है तो इससे इजीली अंडरस्टैंड हो जाता है अगर हम बाद में डिफाइन करना चाहें उस चीज़ को. Comments are single line और multiple lines. Comments को हम single line में भी यूज़ करते हैं और multiple lines में भी यूज़ कर रहे होते हैं और return जो कर रहे होते हैं हम उसको / static और static /. CSS Box Model is a very important part of CSS. There are 4 different parts: margin, border, padding, content. CSS Box Model are of 4 parts. That's why I can explain these 4 parts. Number 1, content. The content of the box. This is
The content of the box, this area, जहाँ पर टैग्स और इमेजेस शो हो रहे होते हैं ऑन द स्क्रीन, इज कॉल्ड कंटेंट. पैडिंग अराउंड द कंटेंट, जो भी हमारा कंटेंट होता है, इमेजेस, टैग्स, उसके अराउंड हमें जो स्पेस चाहिए होता है वो होती है पैडिंग, और ये इस लाइक ट्रांसपेरेंट होती है, हमें शो नहीं हो रही होती है. दिस इज बॉर्डर. Border. A border around the padding and content, that's called border. The last one is margin. This is margin. जो हमें border के around space चाहिए होती है, उसके लिए हम margin यूज करते हैं, और ये भी transparent होती है. Thank you for this lecture. Stay tuned for the next tutorial. Don't forget to like, subscribe and share.